हमारी इंग्लिश लिसनिंग प्रैक्टिस वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए थैंक यू। आज भी आपको एक न्यू इंग्लिश स्टोरी सुनाई जाएगी और फिर आपका टेस्ट होगा जिससे पता चलेगा कि आप कितने अच्छे से सुन पाए, समझ पाए। ये स्टोरी स्क्रीन पर लिखी भी आएगी और सुनाई भी जाएगी ताकि आपकी रीडिंग और लिसनिंग प्रैक्टिस दोनों हो सकें, और फिर स्क्रीन से हटा दी जाएगी और तब शुरू होगा आपका टेस्ट। सो स्टोरी को ध्यान से सुनना। वीडियो के एंड में आपको टेस्ट के आंसर्स मिल जाएंगे और तब मुझे कमेंट्स में बताना कि आपके कितने आंसर्स करेक्ट हुए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंग्लिश स्टोरी। There was once a lonely elephant. One day he set out to find friends for himself in the jungle. He found a monkey and asked him if he would be a friend. The monkey refused and said, "You can't swing from trees like me." The elephant then met a rabbit and asked him to be his friend. The rabbit refused as well, saying, "You are too big to enter my burrow." The elephant then met a frog, who also refused, saying, "You can't leap like me." The elephant ventured deeper into the jungle, where he met a fox. The fox also refused the elephant's friendship, saying, "You are too big." Disheartened, the elephant returned. However, the next day he decided to go to the jungle again. As he entered the jungle, the elephant found all the animals running to save their lives. He stopped the bear to inquire about what had happened. The bear said, "The tiger wants to eat us, and so we are all running to save ourselves." As the elephant was thinking about what he could do to help the animals, the tiger walked up to him. "Mr. Tiger, please spare these animals. Do not kill and eat them," the elephant implored. "Run, or I'll kill and eat you as well," growled the tiger. This angered the elephant, and he kicked the tiger. The frightened tiger ran away. All the animals now wanted to be friends with the elephant. सो ये थी हमारी इंग्लिश स्टोरी और अब बारी है टेस्ट की। The elephant was dash. A. Lonely. B. Happy. C. Sad. D. Upset. Why did he go into the jungle? A. To find friends. B. To kill his enemies. C. To pray. D. None of these. First, he met a dash. A. Monkey. B. Donkey. C. Camel. D. Frog. The monkey dashed to be the elephant's friend. A. Accepted. B. Refused. C. Tried. D. None of these. After meeting the monkey, the elephant met a dash. A. Camel. B. Donkey. C. Rabbit. D. Horse. The rabbit refused to be the elephant's friend because A. He was too big to enter his burrow. B. He was not a rabbit. C. He was lonely. D. All of the above. Whom did the elephant meet after meeting the rabbit? A. Hare. B. Fox. C. Frog. D. Lion.
Did the frog accept becoming the elephant's friend? A. Yes. B. No. C. Maybe. D. Who knows? What did the bear tell the elephant? A. There was a fire in the jungle. B. The tiger wanted to eat all the animals. C. They are having a race. D. None of these. How did the elephant save other animals from the tiger? A. He caged the tiger. B. He killed the tiger. C. He kicked and frightened the tiger. D. All of the above. अब बारी है आंसर्स की, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप बिल्कुल शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो मेरा फुल स्पोकन इंग्लिश कोर्स आ चुका है, जिसमें मैंने बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक बहुत ही अलग तरीके से, मजेदार तरीके से इंग्लिश सिखाई है। एक वेब सीरीज की तरह कोर्स बनाया है। हंसते हंसाते आपको इंग्लिश के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ग्रामर के कॉन्सेप्ट से लेकर सेंटेंस बनाने तक हर चीज समझ में आ जाएगी। इसमें आपको मिलेंगे 60 वीडियो लेसन्स, नोट्स मिलेंगे, क्विजेस मिलेंगे, प्रैक्टिस ग्रुप है जिसमें स्टूडेंट्स ऑडियो और टेक्स्ट मैसेजेस में प्रैक्टिस करते हैं और कोर्स कंप्लीट होने पे सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इसको ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर आप awwalenglish.com पर भी जा सकते हैं। अगर होना है सफल तो फॉलो अव्वल।